In remotely located Burhawa Baithan, a village of Banka district, life has been always difficult for people. Beating the odds of life is a major challenge, taking into consideration the scarce livelihood opportunities for people residing in the village. Located at a distance of more than 25 km from the district headquarters, the mesmerizing bounty of nature in the area hardly indicates the struggle of the Burhawa Baithan residents for existence. हम गरीब आदिवासी दबे कुचले में से है। आदिवासी संथाल लोगों से घृणा करते थे लोग कि आदिवासी संथाल लोग जो है बहुत गरीबी है, साफ सुथरा नहीं रह पाते हैं, उसके घर में बैठने उठने के लिए भी लोग नहीं आते थे, छुआछूत मानते थे। In the aspirational district of Banka, the economy largely depends on agriculture and wage labor earnings. In tribal village of Burhawa Baithan, the small and marginal farmers, along with landless laborers, constitute the majority of the population. Most of the population struggles to earn their livelihood using small and fragmented landholdings and poorly productive indigenous livestock. Many of the households are facing situation of seasonal migration to urban areas in search of employment and livelihood. Rearing livestock didn't prove easy task for the residents, taking into account the remote location of the village, unscientific livestock management practices, and poor access to animal health and advisory services. Livestock owners had to travel around 20 to 25 kilometers to access even minor animal health services like vaccination and deworming. Not just in Burhawa Baithan, but also in surrounding villages like Logain and Khirkitari. The livestock owners faced similar challenges. However, things started to change for better after 2017 when the community animal health centers were established by Bihar Agricultural University under the tribal sub-plan of Union Government. कृषि विज्ञान केंद्र बांका के द्वारा एक प्रोग्राम चलाई जा रही थी किसान चौपाल, जिसके अंतर्गत जब हम लोग बांका जिला के ही एक बुढ़वा बथान गांव जो कि ट्राइबल गांव है, संथाली गांव है, यहाँ पर जब आए किसान चौपाल किए तो सबसे ज़्यादा देखने के लिए क्या मिला, यह महिलाएं मिल रही थी, जेंट्स बहुत कम थे। और ये बांका ज़िले के जो शहरी क्षेत्र है उससे लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है और यहाँ पर आने जाने की भी सुविधा कम। जब हम लोग यहाँ चौपाल किए तो जब सर्वे किए तो पता चला धान की फसल भी बहुत कम हो पाती होती है, नहीं होती है। उसके बाद रबी की फसल तो लगभग समाप्ति हो जाती है, दलहन तिलहन की उतनी ही कमी है। और उसके बाद जो साइड वाली इनकम होती पशुपालन की, उसमें लोग लगे हुए थे क्योंकि उसमें थोड़ा विश्वास था, लेकिन समस्या आ रही थी, बीमारी होती थी जिसके कारण बकरियां मर जाती थी। गाय है तो उसमें उत्पादन कम हो रही, गाय भी मर जा रही है। मुर्गी की भी वही स्थिति थी कि 7-8 अंडे तक ले पाते थे लोग और वज़न भी लगभग 7-8 महीने, एक साल में उसकी 1 किलो तक मात्र वज़न आती थी, जिसके कारण आमदनी बहुत कम थी, नहीं के बराबर आ रही थी। तो इन लोग का जब
पूछे इनसे कि जेंट्स लोग क्यों नहीं ज़्यादा यहाँ दिखते हैं, तो पता चला कि लोग चूँकि जीविका का कुछ साधन नहीं हो रहा, जिसके कारण लोग बाहर कमाने चले जाते हैं। तब हम लोग शुरुआत किए कि इस गांव को कैसे विकसित किया जाए। इसी दौरान 2016 में हम लोग के पास आदिवासी उप योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट आई। तब हम लोग बांका जिले के 23 गांव का सिलेक्शन किए, उसमें एक बुढ़वा बथान गांव को भी रखे और यहाँ एक एक बिंदु पर हम लोग काम करना शुरू किए। Considering the untapped potential of livestock sector in the region, the scientists at Bihar Agriculture University developed a community-run sustainable model for providing animal health services at doorstep of people residing in remotely located tribal villages of Baka, while creating employment opportunities for local youth. As part of capacity building initiative, 3 youth from each tribal village were selected and provided with training for imparting basic animal health and livestock management services, including vaccination, nutrition management, artificial insemination, first aid for injured animals, deworming, diarrhea, fever, anorexia, etc. पहले मवेशी को खुराहा होता था, उसके लिए हम लोग देवी देवता का मतलब ज़्यादातर सुमरन करते थे, लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने हम लोगों को ऐसा बोला कि ये देवी देवताओं का बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी है, इसका इलाज है, इसका इलाज से ही पशु को बचाया जा सकता है। इसके लिए भी हम लोगों को टीकाकरण के लिए दवाई मुहैया कराते हैं, समय समय पर टीकाकरण करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग वेटनरी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था दवाई लाने के लिए या डॉक्टर बुलाने के लिए। कम से कम एक मवेशी पर लगभग मोटा मोटे 1000 से 2000 रुपया का इलाज का खर्चा होता था, लेकिन आज पशु स्वास्थ्य सलाह केंद्र ही हमारे यहाँ हुआ है, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। वैज्ञानिक लोगों ने ट्रेनिंग करके आभास कराए, जो कि अभी हम बहुत अच्छे अनुभव कर रहे हैं। The subject matter expert at KVK Baka provided medicines, equipment and technical backstopping along with monitoring the imparting services of animal health. The infrastructure available with local institutions, including village panchayat, were utilized to establish community animal health centers where these youth provided the basic animal health services at a nominal charge. एक सामुदायिक पशु स्वास्थ्य सलाह केंद्र की स्थापना की गई यहाँ पर, जहाँ पर कि प्राथमिक उपचार के लिए सभी तरह की मेडिसिन वहाँ पर रखी गई और इसके साथ साथ टीकाकरण से लेकर वहाँ सभी तरह के बैनर लगाई गई ताकि लोग वहाँ पर जाके बैठे पढ़े। The sustainable model has proved to be highly result oriented. Now, the livestock owners in and around these villages can easily access the animal health services. More than 3,000 animals, including cattle, goats, and sheep, are provided with animal health care services like deworming, vaccination, treatment of minor diseases, etc. through these community animal health centers. मवेशी को बीमार पड़ गया तो हम लोग सोचते रहते थे, वही अपना जो मतलब घरेलू उपचार उससे थोड़ा बहुत देते थे, ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं तो मवेशी मर गया, देखते देखते मर जाता था, उसका इलाज हम लोग नहीं करा पाते थे। तब धीरे धीरे हम लोग को जानकारी हुआ और एक क्या कहते हैं कृषि विज्ञान के तरफ से हम लोग को एक ट्रेनिंग मिला और उसके तरफ से सहयोग मिला सहयोग मिला कि आप लोग अपना मवेशी को कैसे इलाज कराइएगा, कैसे रखिएगा, रहन सहन के बारे में सारा चीज़ ट्रेनिंग दिया, सारा चीज़ बताया गया। उसके बाद से हम लोग का मवेशी को भी बहुत राहत है अभी ट्रीटमेंट के लिए, दवाई सुइया देने में हम लोग को भी मतलब अपने से भी दे सकते हैं, हल्का फल्का हुआ तो हम लोग अपने से भी दवाई खिला देते हैं और हल्का मतलब सुई वगैरह भी लगा देते हैं। The efforts of capacity building in majority of cases have enabled
livestock owners to diagnose and treat minor health problems of their animals. As a result of this initiative, the average cost for seeking each veterinary service has also drastically reduced by 80% from rupees 320 to rupees 65 only. Further, the average transportation cost for seeking animal health services has reduced by 45% from rupees 44 to rupees 24 for each visit. There has been 32% increase in goat population in village since vaccination drive was undertaken for preventing PPR and ET diseases in goat. The tribal sub-plan intervention has also helped in replacing 42% of local nondescript poultry breeds with Gramapriya and Vanraja breeds. The contribution made through these community animal health centers were widely recognized by various stakeholders, including the farmers, policymakers, and various councils of the university. Honorable Minister, Department of Agriculture, Government of Bihar, has also acknowledged the contribution made through these community animal health centers. Considering the success of these pilot animal health centers, Bihar Agriculture University is considering replication of these centers in other districts. The community health centers are example of one of the several efforts made by Bihar Agricultural University Sabor under Tribal Sub-Plan Project across 33 tribal-dominated villages of Banka, Kishanganj and Katihar districts for overall improvement in livelihood and nutritional security of tribal household in these districts. Besides addressing the issues of poor animal health services, Bihar Agricultural University has also made holistic efforts towards addressing the issue of poor crop productivity, low cropping intensity, over-reliance on crop production and malnutrition. धान यहाँ की मुख्य फसल है और ये जो गांव है ये ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इन लोगों को धान का प्रशिक्षण करवाया। धान के प्रशिक्षण में हम लोगों ने सहभागी धान और सबौर अर्धजल धान दिया, जिसके लिए हमारे जो किसान थे उन किसानों ने इसके प्रशिक्षण को लगाया और लगाने के बाद ये हमारी जो प्रभेद थी, इस प्रभेद में कम पानी की आवश्यकता होती है और कम दिन में तैयार हो जाती है, जिससे एश्योर्ड इनको प्रोडक्शन हो जाता था। धान के साथ साथ हम लोगों ने चना की उन्नत प्रभेद दिया, मसूर की, सरसों की और मूंग की, इसके साथ साथ और भी गेहूं है, इन सब की उन्नत प्रभेद का हमने प्रशिक्षण किया। For enhancing crop productivity and cropping intensity, the long duration local crop varieties were replaced with medium duration drought resistant rice and summer green gram cultivation of moong was introduced. As a result of this intervention, productivity of rice, wheat and maize increased by 21.5, 13.8 and 32.3% respectively. The farm interventions under the Tribal Sub-Plan Project helped to replace obsolete rice varieties with early maturing, abiotic stress-tolerant varieties. Rice cropping duration has also reduced by 20 days, which enabled the early showing of the wheat crop. पिछले 4 साल से ये कर रहे हैं और आज ऐसा है कि पूरा बुढ़वा बथान गांव में हमारी दी हुई तकनीक और हमारी दी हुई प्रभेद हर किसान लगाते हैं, जो आज खुशहाल हैं। Over-dependence on agriculture was one of the reasons due to which tribal households were facing issue of livelihood and nutritional insecurity.
To address this issue, various low input and economically productive activities were introduced that not only were able to diversify the income sources but also contributed towards enhancement of nutritional security of the poor tribal household. These initiatives included backyard poultry, mushroom cultivation, kitchen gardening, use of homestead wasteland for cultivation of fruit tree crops, and others. As part of efforts made for diversifying income sources, beekeeping was promoted in villages of Kishanganj and Banka districts, having sizable tribal population. The small and marginal farmers in tribal villages who earlier used to primarily depend on the meager farm income for running their home and hearth have effectively increased their income through beekeeping. With increased income, quality of life of tribal people has improved in number of cases. As the result of these activities, 30% of the households moved from food insecure to food secure category due to increased access to and consumption of vegetables, meat, and egg. On an average, nearly 1/5 of the targeted households have started consuming mushroom as major vegetable in winter season. Following the tribal sub-plan intervention, the monthly income of the targeted families in selected villages on an average registered an increase of 40% from rupees 44,390 to rupees 62,536 per annum. आज ऐसी स्थिति है कि प्रत्येक घर सब्जी से, फसल से, पशुपालन से, इन सब समग्र रूप से अगर हम देख लें तो 4 से 5 हज़ार रुपये, कोई 6 हज़ार रुपये प्रति महीने पा जाते हैं, जिससे इनके रहन सहन में वृद्धि हो रही है। ये अपने परिवार को आगे ले जा रहे हैं, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं। Implementation of tribal sub-plan has successfully bridged the developmental gaps in the tribal villages, particularly those related to livelihood and nutritional security. Crop diversification, besides varietal changes, apart from changes in cropping pattern introduced as part of farm intervention under tribal sub-plan, has increased the income of tribal population from traditional farming. The dependence of tribal residents on income from traditional farming has reduced comparatively following implementation of the tribal sub-plan. The success of tribal sub-plan interventions has led the university to explore the possibility of taking similar measures in more tribal villages located in the districts falling under the jurisdiction of the university. For the purpose, it is being looked into how far convergence of different schemes aiming at improving livelihood and nutritional security of people could be feasible for attending target objectives of development in tribal villages.